Hello, hello, student. Myself, Priyesh Pandey, faculty of GIC campus, and my highest qualification is MTech from NIT Varanasi, and my GATE score is 717 and GATE marks is 68.3. So here today I discuss resonance. What is resonance? Resonance is a condition at which total reactance is equals to 0. What do you mean by total reactance is 0? When we draw a RLC series circuit in AC analysis, then we found that the total reactance is 0. Here V of t equals to Vm sine of omega t. Here R, L and C. R, L and C. These are the RLC series circuit. These are the RLC. These are the RLC series circuit. Here R, L and C is connected with voltage source in series. Since Vt is equal to Vm sin omega t represent a AC source. There are two types of source. One is DC and another is AC. What is the difference between DC and AC? DC means direct current. What is direct current? When we plot the graph between voltage and time, then there is no change in voltage with a time. Then this type of graph is called direct voltage graph. But when graph is drawn with time and voltage is change our amplitude with a time is called AC voltage or alternating voltage. Here Vm is Vm equals to maximum voltage or peak voltage. There are three types of voltage. One is maximum voltage, another is RMS voltage, and third is average voltage. There is some relations between RMS, average and peak. We know V RMS is equals to Vm divided by root 2. Vm is maximum voltage or peak voltage and Vrms is RMS voltage. It means root mean square voltage. Root mean square voltage. When maximum voltage is divided by root 2, then we found a RMS voltage. This RMS voltage Vrms equals to Vm divided by root 2 is only for a
sinusoidal waveform. For different types of waveform, our RMS voltage is different. For triangular waveform, VRMS is Vm divided by root Vm divided by root 3. For square wave, this VRMS is equals to for a square wave. For a square wave, this VRMS is equals to Vm. Vm. So first of all, we discuss resonance. So what is resonance? The resonance is a condition at which total reactance is 0, and when we compare two circuit, one is RLC series circuit and another is RLC parallel circuit, then we found that when reactance is 0, it means one time current is maximum, another time current is minimum. Current is minimum. Here we draw series RLC circuit, V of t, R, L, and we know Z equals to R XL plus X of. We know that XL equals to omega L and XC equals to 1 by omega C. XL equals to omega L and XC equals to 1 by omega. When source is DC, or we can say that in a DC analysis, always omega equals to, because in DC analysis there is a no change in output with a time, so omega is 0. When omega equals to 0, it means 0 into L and XC equals to 0 into XL equals to 0 and XC equals to finite. So in DC analysis, XL act as a short circuit and XC act as a open circuit.
So in DC analysis only we teach R circuit because omega is D0 in DC analysis. When we draw a DC source V, here R, here L, then this XL act as a 0, it means the circuit act like this, because omega is 0, XL is 0, it means here reactance act as a short circuit. But when we draw a circuit having a R and C in a circuit with DC voltage source, then this circuit act as a open circuit because Xc equals to infinite. Everyone know this point. So after DC we discuss AC. In AC analysis, V of t Vm sin omega t, omega equals to 2 pi f. Omega is angular frequency and omega equals to pi by t time period equals to 1 by f. When time increase, frequency decrease. These are the relations between time period and natural frequency and angular frequency and time. When we discuss the AC analysis, this frequency does not constant. Here we take frequency is equal to 50 Hz. Here we take frequency equals to 50 Hz. So omega equals to 2 pi into 100, so 2 pi into 50, so 100 pi equals to 304 radian per. When we draw a graph, when we draw a circuit in an AC analysis in which R, L and C are present, these are the circuit in which RLC components are connected with AC source. This R, L and C are connected in series,
So this circuit is called a RLC series circuit, and this component connected with a AC component, AC voltage source. This this R, L and C are the passive components and having some properties. R has a properties to dissipate or release the energy. When current is passing through a resistance, then heat is released, then this heat is equals to I square R into T. Here T equals to 1 second, so H equals to I square to R. When we draw a graph between H and I, we found this graph is parabolic in nature. What do you mean by this? This meaning is when current is increasing two times, then heat release through a resistance four times. These are the meaning of H is directly proportional to I square, and graph is parabolic. These are the relation between heat release through a resistance and current. Similarly, there are two another components, XL and XC. XL 2 pi F into L, XC is 2 pi one divided by 2 pi F into L equals to inductor, or C equals to capacitor. L and C are also a passive components having a property to store energy in the form of magnetic field and electric L and C are the passive components and having a property to store energy in the form of magnetic field and electric field. Inductor store energy in the form of electric field, magnetic field, and this energy is equals to 1 by half Li square. And capacitor store energy in the form of electric field, and this energy equals to 1 by half
CV square. We know energy stored by a capacitor is equals to 1 by half CV square, and Q equals to C into V, and omega is equal to Q into. So we write that omega divided by 2. Also we write omega is equal to change of omega divided by change of Q. Here change of omega is work done, omega is work done, Q is charge. These are the relation between work done, voltage and charge. Since Q is charge, C is capacitor and V is voltage. So here we write that V equals to Q by C. So EC means energy stored in a capacitor in the form of electric field is equals to 1 by half C Q by C. EC equals to 1 by 2 C Q square to C square, cancel, EC equals to 1 by 2 C square, right? These are the energy stored in a capacitor in the form of electric field. Here these are the capacitor. Since C equals to epsilon naught A by, here A is area, B is distance between the plate, and unit is absolute permittivity. When area is increased, then capacitor is also increased. But when distance between plate is increased, the capacitor is decreased. When suppose epsilon naught and D equals to K, K equals to constant. So write that C equals to K into A. When remove this constant, we write that C is directly proportional to A, and when we draw a graph between C and S, we found this graph is linear in a nature. Linear in a nature. What do you mean by linear? For linearity, it is some necessary conditions. One is it follow additivity, and second is homogeneity. For linear. For linearity, there are two conditions. One is it follow the additivity rule, and second it follow the homogeneity rule. Then system is linear, otherwise system is non-linear. We can also say that
For a linearity, there are some conditions, and these conditions are, one is additivity and another is homogeneity. But in case of resistance, inductance and capacitance, these are the passive components and it's follow the Ohm's law, because when we graph is draw, then find that this graph comes a linear graph. After representing a graph, then found that this graph it is linear, then finally we can say that these components follow the Ohm's law. So finally we can say that for Ohm's law, linear graph is necessary, otherwise component does not follow the Ohm's law. When we draw a graph between capacitor and distance, then found that this graph is hyperbolic in nature, because C equals to epsilon naught A by C. We take epsilon naught into A equals to K and K equals to constant. So C equals to K by so C is inversely proportional to right? These are hyperbolic graph. These are hyperbolic graph. So after study RLC circuit, its properties, we discuss resonance. Here the AC circuit, Vt equals to R, L and here R, XL and Z is impedance, we write R equals to XL, XC, R equals to J of omega L, J of omega. So Z equals to R J omega L minus omega. So finally we write that R of square equals to omega L minus omega C whole of square. We discuss resonance and हमने बोला कि रेजोनेंस क्या है. रेजोनेंस एक कंडीशन है जिसमें टोटल रिएक्टेंस हमारा 0 होता है. तो हमारे पास में दो पार्ट है, एक रेसिस्टेंस और एक रिएक्टेंस का. हमने अभी बोला कि रेजोनेंस का एक कंडीशन है जिसमें टोटल रिएक्टेंस हमारा 0 होता है. तो टोटल रिएक्टेंस हमारे रेजोनेंस कंडीशन में 0 होते हैं. इसका मतलब है कि ये जो हमारा है वो एक टोटल रिएक्टेंस है और वो है x ऑफ. तो रेजोनेंस कंडीशन, एट अ रेजोनेंस कंडीशंस x is equal to 0, it means omega L minus 1 by omega C equals to 0. So omega L equals to 1 by omega C. Omega L is XL and 1 by omega C is XC. हमने देखा कि रेजोनेंस कंडीशन में
टोटल रिएक्टेंस जीरो होते हैं। और जब हमने टोटल रिएक्टेंस को जीरो पुट किया तो हमने पाया कि ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी की वैल्यू जो है वो जीरो हो गई। ओमेगा एल इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी के बराबर हो गया। इसका मतलब हो गया एक्सएल जो है एक्सी के बराबर में हो गया। रेजोनेंस के कंडीशन में टोटल रिएक्टेंस जो होता है वो जीरो होता है, लेकिन इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर होता है। तो हमने देखा कि इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है वो ना ही जीरो के बराबर होता है, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी जो होता है वो जीरो के बराबर नहीं होता है। जो केवल जीरो होता है वो होता है टोटल रिएक्टेंस इज जीरो। बोल सकते हैं इन ए रेजोनेंस एक्सएल नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड एक्सी नॉट इक्वल्स टू जीरो, ओनली एक्स इक्वल्स टू जीरो इन ए रेजोनेंस। रेजोनेंस में ना तो एक्सएल जीरो होता है ना एक्सी जीरो होता है, केवल जीरो जो होता है वो एक्स होता है, और एक्स जो है हमारा टोटल रिएक्टेंस होता है। एक्सएल जो होता है एक्सी के बराबर हो जाता है रेजोनेंस के कंडीशंस में। जब एक्सएल एक्सी के बराबर होता है तो हमारा जो इम्पीडेंस है वो केवल रेसिस्टेंस के बराबर हो जाता है। और जब मेरा टोटल रिएक्टेंस जीरो होता है तो मेरा सर्किट जो है इस तरीका का दिखने लगता है। एक्सएल इक्वल्स टू जीरो का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। तो हमने देखा कि जेड जो है मॉड ऑफ जेड जो है आर के बराबर हुआ, और ये जेड की सबसे मिनिमम वैल्यू होती है जो कि आर के बराबर होती है। तो हमने देखा कि जो एसी एनालिसिस हम पढ़ रहे हैं, एसी एनालिसिस में आरएलसी सीरीज सर्किट पढ़ रहे हैं, उसमें जब रेजोनेंस का कंडीशन आता है सीरीज आरएलसी सर्किट में, उस समय इम्पीडेंस जो होता है हमारा वो मिनिमम होता है, उसकी वैल्यू जो होती है वो आर के बराबर होती है। जब भी कभी इम्पीडेंस जीरो होता है तो हमने देखा है कि करेंट जो होता है उस समय मैक्सिमम होता है। इसकी वैल्यू होती है V डिवाइडेड बाय जेड मिनिमम, और इसको लिख सकते हैं V डिवाइडेड बाय आर मिनिमम। ये जो है सीरीज आरएलसी सर्किट में कंडीशंस है कि सीरीज आरएलसी सर्किट में करंट आपका मैक्सिमम होता है और आपका इम्पीडेंस जो होता है वो मिनिमम होता है। इसलिए आपका जो सीरीज आरएलसी सर्किट है एक हाई पास फिल्टर की तरह बिहेव करता है। हम जब इसके आगे देखते हैं एक वेव फॉर्म में, जब हम इसके आगे देखते हैं एक वेवफॉर्म में, तब हम पाते हैं ये मेरा आई है, ये मेरा फ्रीक्वेंसी है, और हमने इस तरह से इसे ड्रॉ किया। कि यहां पर एफ नॉट जो है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर हमारा जो करंट की वैल्यू है वो मैक्सिमम है। एट अ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमारा करंट जो है एट अ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी
the current is maximum from this graph. लेकिन हमने पहले देखा था कि एक F1 है और दूसरा F2 है। ये भी फ्रिक्वेंसी है, लेकिन इस दो F1 और F2 को हम बोलते हैं लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहां से यहां F1 है और यहां से यहां मेरा F2। F2 माइनस F1 जो होता है डेल्टा F है, और इस डेल्टा F को हम बोलते हैं बैंड विड्थ। F1 और F2 पर जो करंट की वैल्यू होती है वो होता है Im by √2। इट मीन्स 0.707 Im। ये जो वैल्यू है वो F1 और F2 पर करंट की वैल्यू है, और ये वैल्यू है 70.7% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू at F1 and F2। It means at a lower cutoff frequency and a higher cutoff frequency, the value of current is 70% of maximum value। तो हमने अभी बैंडविड्थ तो देखा कि बैंडविड्थ क्या है, तो थोड़ा हम चर्चा करते हैं बैंडविड्थ होता क्या है। एक्चुअल में जो बैंडविड्थ है वो रिप्रेजेंट करता है विड्थ ऑफ ए सिग्नल। हमने देखा कि F2 माइनस F1 को हम डेल्टा F बोल रहे हैं, और ये जो डेल्टा F है वो मेरा बैंडविड्थ है। जब F2 को इंक्रीज करते हैं और F1 को कांस्टेंट रखते हैं तो डेल्टा F इंक्रीज करता है, और जब डेल्टा F इंक्रीज करता है इसका मतलब है कि हमारा बैंडविड्थ इंक्रीज करता है। और जब बैंडविड्थ इंक्रीज करता है तो सिग्नल जो है वो जो फॉर्म में आना चाहिए उस फॉर्म में नहीं आता है। तो हम बोल सकते हैं कि एक गुड सिग्नल के लिए जितना कम से कम बैंडविड्थ हो वो अच्छा है। यदि बैंडविड्थ की वैल्यू ज़्यादा होगी इसका मतलब ये है कि दो फ्रीक्वेंसी के बीच का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है, जिसके चलते आपको एक जो प्रॉपर सिग्नल आना चाहिए था वो आपके पास नहीं आ पा रहा है। इसका मतलब है कि उस सिग्नल में अनवांटेड सिग्नल का होना ज़्यादा हो गया है। जो सिग्नल थी उसमें कुछ अनवांटेड सिग्नल प्रवेश कर चुका है जो उस सिग्नल को डिस्टर्ब कर रहा है, जिसके चलते आपके पास में एक प्रॉपर सिग्नल नहीं आ पा रहा है। तो हम प्रॉपर सिग्नल चाहते हैं, तो प्रॉपर सिग्नल के लिए एक टर्म है जिसको बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर क्या है? हमने इसके पहले देखा कि बैंडविड्थ जो है दो सिग्नलों का डिफरेंस है,
जब हम जो दो जो फ्रीक्वेंसी है उसको, उसके डिफरेंस को इंक्रीज करते हैं तो हमारा बैंडविड्थ जो है वो इंक्रीज करता है। जब हमारा बैंडविड्थ इंक्रीज करता है तो जो सिग्नल हमें चाहिए वो प्रॉपर वे में वो सिग्नल नहीं पा पाते हैं, उसमें चेंजेस दिखाई देते हैं। सपोज एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं मैं। सपोज एक सेंडर है और एक रिसीवर है। सेंडर ने रिसीवर को फ़ोन किया और बोला हेलो, और रिसीवर ने उस हेलो वर्ड को नहीं सुना। इसका मतलब है कि जो सिग्नल सेंडर ने रिसीवर को भेजा था वो रिसीवर के पास नहीं पहुंचा। इसके पीछे का रीज़न यही है, जो बैंडविड्थ था सिग्नल का जो सेंडर भेज रहा था वो लार्ज था, और लार्ज होने का कारण है कि दो फ्रीक्वेंसी के बीच का जो डिफरेंस था वो लार्ज था, और लार्ज होने से अनवांटेड सिग्नल में ज़्यादा प्रवेश कर गया, और जिसके चलते रिसीवर जो है वो एक प्रॉपर सिग्नल को नहीं पा सका। तो हमें एक प्रॉपर सिग्नल चाहिए, तो प्रॉपर सिग्नल के लिए एक टर्म आ रहा है वो है क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर एक टर्म से ड्राइव हुआ है, उसका मतलब होता है क्वालिटी। हर कोई जानता होगा कि क्वालिटी का मतलब क्या होता है। क्वालिटी का मतलब होता है बेस्ट। तो हमें कोई भी चीज़ें बेस्ट चाहिए तो बेस्ट के लिए कुछ बेस्ट करना भी पड़ता है। तो बेस्ट के लिए यह है कि हमें बैंडविड्थ को घटाना होगा, और जिस फैक्टर से क्वालिटी में इम्प्रूव करते हैं और क्वालिटी को बढ़ाते हैं उसी को हम बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर जितना अच्छा होता है क्वालिटी ऑफ सिग्नल भी रिसीवर को उतना ही अच्छा मिलता है। तो क्वालिटी फैक्टर जो है वो होता है रेजोनेंस डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। और क्वालिटी फैक्टर इक्वल्स टू होता है वोल्टेज अक्रॉस VL और VC डिवाइडेड बाई V ऑफ R। हम इसमें से VL को लेते हैं और यहाँ VR को लेते हैं, तो इन ए सीरीज RLC सर्किट हम लिख सकते हैं I इंटू XL डिवाइडेड बाई I इंटू R। I कैंसिल तो लास्ट में बोलता है XL बाई R। तो क्वालिटी फैक्टर इक्वल्स टू हो जाता है XL डिवाइडेड बाई R, और XL को लिख सकते हैं ओमेगा L डिवाइडेड बाई R। हम स्टडी कर रहे हैं रेजोनेंस का, इसलिए हम यहाँ ओमेगा की जगह पे लिखेंगे ओमेगा नॉट इंटू L बाई R, और यहाँ लिखेंगे क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर इक्वल्स टू हो गया 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट L ऑफ C इंटू L बाई R। फाइनली क्वालिटी फैक्टर हम लिखते हैं अंडर रूट ऑफ L इंटू C इंटू L बाई R। तो 1 बाई R इक्वल्स टू अंडर रूट L ऑफ C इक्वल्स टू क्वालिटी फैक्टर। ये जो है फाइनल एक्सप्रेशन है एक क्वालिटी फैक्टर का, और क्वालिटी फैक्टर को हमने और भी देखा है
वो होता है रेजोनेंस डिवाइडेड बाय बैंड बंद कर दीजिए। हाँ हाँ, आफ्टर अब कल नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक है पैरेलल आरसी सर्किट।